Welcome student in first session from your textbook chapter number 16 live. This chapter is related to physics. The world is largely known through the senses. The sense of sight is one of the most important senses. Okay, through it we see mountain, river, trees, plants, chairs, people and so many other things around us. So we also see the clouds, rainbows and birds flying in the sky. At night we see the moon and the stars. You are able to see the words and sentence printed on this page. How is seeing made possible? Means आप ये सब चीजें कैसे देख सकते हो? How we have to able to see the things? So that answer you will get in this chapter. Okay, let's start. Light, it is a form of energy that enables us to see around us. It is a one kind of energy that enable us to see around us. Means with the help of that only we can see around us. Clear? So light is needed to see things around us. So we are able to see the beautiful world around us because of the light. Okay, we can read a book, see pictures in a magazines and watch televisions, movies due to the existence of the light. And it is the light which make us see our image in looking mirror. So we detect the light with our eyes. और light को कैसे detect करते हैं? With our eyes. Means though we see the various object or things around us with our eyes. Means with the help of eyes we can see. Okay, but eyes alone cannot see any object. Means सिर्फ eyes है पर light नहीं है तो आप उसमें कुछ भी object नहीं देख सकते. Okay, so we also need a source of light. Okay, to make objects visible. Clear this one? For example, we cannot see any object in a dark room or in the darkness of night because there is no light. In a dark room or in the night, to make objects visible, but as soon as an electric bulb or a tube light, torch, etc. is switched on and light falls on the object, okay, we are able to see them clearly. Or jesse means light, any means source of light, okay, that falls on that object, we are able to see the object clearly. It is only when light coming from an object enters our eyes, means light क्या करती है, enters to our eyes, that we are able to see that object. So this light may have been emitted by the object itself or it may have been reflected by the object. It is an electromagnetic wave that can travel through medium as well as through vacuum. So types of object. So first है luminous object. So luminous means क्या होता है? Objects like sun, stars, electric bulb, torch, candle, fire, etc. Okay, so these are okay which emit their own light. Which emit their own light are called the luminous object. Means जो object self light emitted करते, so that is called the luminous object. You can see the luminous object due to the light emitted by them. Next one, non-luminous object. So non-luminous object क्या होते हैं? Those objects which do not emit light themselves but only reflect or scatter the light which falls on them are called non-luminous object. Means वो object self light emitted नहीं करते but वो reflect करते हैं. Okay, means जब भी light उनके ऊपर falls होती है तो वो light को reflect करते हैं. So that is called the non-luminous object. So example, flowers, chair, book, tree, mirror, floor, etc. Means अगर आप इसका एक्सपीरियंस देखोगे, अगर आप डार्क रूम में बैठे और वहां पे फ्लावर्स, चेयर, बुक, मीन्स ऑल थिंग्स आर देयर, ओके, बट देर इज मीन्स नो लाइट बिकॉज देर इज ए डार्क रूम. सो दीज ऑब्जेक्ट्स आर नॉट विजिबल. व्हाई? बिकॉज they are what? Non-luminous object. They are what? Non-luminous object. Clear this one? So they do not has its own light. We can see the non-luminous object because they reflect light, okay, into our eyes. So even the moon is also non-luminous object. Moon is also what? Non-luminous object because it does not have its own light. We can see the moon because it reflects the sunlight falling on its surface towards us. Clear this one? So in fact, most of the objects around us are non-luminous object. Clear this one? So light travels in straight lines. Light कैसी travels होती है?
straight line. So light enable us to see object from which it comes. Which it comes means that luminous object, okay, or from which it is reflected. It is reflected means non-luminous object, okay, means दोनों ही situation में आप things को देख सकते हो. Clear this one? For example, sun. Sun gives out light. So we can see the sun because the light coming from the sun enters our eyes. So that's why we can see the sun. Clear? Look that bulb. Okay, that bulb is an electric bulb gives its own light. So it is a luminous object. And look that flower. A flower does not give its own light. It's non-luminous object. There is a one flower pot is there. Okay. So we can see the flower during daytime because it reflects sunlight falling on it into our eyes. Means सन जो लाइट एमिट करता है वो फ्लावर पे फॉल्स होती है और फिर फ्लावर्स मीन्स लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, स्कैटर करता है. ओके, दैट एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम दैट फ्लावर, okay, that light enters to our eyes, then we able to see the flower. So when the sunlight or bulb light falls on a flower, okay, or a chair, some of this light is reflected towards us, and when the reflected light enters to our eyes, then we are able to see the flowers or chair. Why? Because to our eyes this light appears to be coming from the flower or chair. Means after reflection from that flower, okay, and that chair, okay, example like that chair, so that light come to our eyes. So that's why we can able to see the flower and chair. Clear this one? Okay, when light falls on any surface, either of this phenomenon takes place. तो इसमें कौन सा phenomenon होता है? फर्स्ट, लाइट फॉलिंग ऑन सरफेस में गेट एब्सॉर्ब, सरफेस क्या करता है, लाइट को एब्सॉर्ब कर लेता है. सेकेंड, लाइट ऑन फॉलिंग ऑन सरफेस में गेट पास थ्रू द सरफेस, और फिर क्या होता है कि सेकेंड मीन सरफेस से लाइट पास हो जाती है. थर्ड, लाइट ऑन फॉलिंग ऑन सरफेस में बाउंस बैक, ओके, और लाइट क्या हो जाती है, बाउंस बैक हो जाती है, मीन्स ये टकरा के वापिस चली जाती है. ओके, मीन्स लाइट फॉल्स होती है सरफेस पे, फिर टकरा के बाउंस बैक हो जाती है. क्लियर दिस वन? मीन्स जब भी लाइट्स फॉल्स होती है एनी सरफेस पे, सो दिस थ्री फिनोमेनॉन टेक्स प्लेस. ओके, या तो एब्सॉर्ब होंगी, या तो पास हो जाएगी, या फिर सरफेस में फॉल्स होके बाउंस बैक हो जाती है. क्लियर दिस वन? नाउ नेक्स्ट वन, रिफ्लेक्शन. ओके, सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. So when light falls on the surface of an object, some of it is sent back. Okay, ये आपने अभी देखा कि जब भी लाइट सरफेस पे फॉल्स होती है तो थ्री फिनोमेनॉन कैन टेक्स प्लेस. ओके, सो थर्ड वन इज दैट व्हाट, दैट इज अ सेंड बैक. ओके, सो व्हेन लाइट फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सम ऑफ इट इज सेंड बैक. सो द प्रोसेस of sending back into light rays which falls on the surface. Okay, means the process of sending back means light falls हो रही है और फिर वो क्या हो रही है, sending back. Clear this one? The light rays which fall on the surface of an object, it is called the reflection of light. और simply आप उसे क्या कह सकते हो, it is the bouncing back of the light rays on striking the surface. Means जैसे ये sun है, सन से लाइट एमिट हो रही है और कहाँ पे फॉल्स हो रही है, ये सरफेस पे फॉल्स हो रही है, फिर यहाँ पे स्ट्राइक मीन्स यहाँ पे टकराती है और फिर टकरा के क्या हो जा रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, मीन्स ये बाउंसिंग बैक. सो जो ये बाउंसिंग बैक होती है, सेंडिंग बैक होती है प्रोसेस, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन. क्लियर? सो द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज शोन इन दैट फिगर. व्हेन ए बीम ऑफ लाइट AO, okay, means suppose here is a beam of light is there, look here this arrow. Okay, so when a beam of light AO, okay, AO falls on a mirror. अब यहाँ पे ये क्या है, ये मिरर है, तो AO लाइट यहाँ मिरर पे फॉल्स हो रही है. ओके, एट पॉइंट O. कहाँ पे फॉल्स हो रही है, एट पॉइंट O. क्लियर दिस वन? इट इज सेंड बैक बाय द मिरर. अब ये यहाँ पे मिरर से स्ट्राइक होके क्या हो रही है, सेंड बैक. ओके, इट इज सेंड बैक बाय द मिरर इन अनदर डायरेक्शन. इसी डायरेक्शन में नहीं जा रही, मीन्स फॉल्स होके टकरा के अनदर डायरेक्शन में जा रही है. ओके, सो दैट डायरेक्शन इज OB. एंड वी से दैट द मिरर हैज रिफ्लेक्टेड द बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट.
सो मिरर ने क्या किया, लाइट को रिफ्लेक्ट कर दिया. सो वी कैन कंपेयर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टू द बाउंसिंग बैक ऑफ ए टेनिस बॉल ऑन हिटिंग ए वॉल. ओके, आप देखते होंगे टेनिस बॉल को जैसे आप वॉल पे मीन्स उसको थ्रो करते हो, तो आफ्टर हिटिंग मीन्स जब वो टकराती है, टकरा के वो अनदर डायरेक्शन में मूव करती है. ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ वी थ्रो अ टेनिस बॉल एट ए वॉल, द बॉल बाउंस बैक. ओके, तो ये बाउंस बैक हो जाती है. तो दिस मीन्स दैट द वॉल सैंड इट्स बैक. तो वॉल क्या करती है, उसको सैंड्स बैक कर. सिमिलरली when light is falls on the surface of an object, so the object sends the light back and we say that the object reflects the light. Clear this one? So most of the object reflect light which falls on them. Some object reflect more light whereas other object reflect less light. Means कुछ object है जो ज्यादा light reflect करते हैं और कुछ object है जो कम लाइट रिफ्लेक्ट करती है. द ऑब्जेक्ट्स हैविंग पॉलिश्ड एंड शाइनिंग सरफेस रिफ्लेक्ट मोर लाइट. मीन्स जो पॉलिशिंग रहते हैं, जिनका सरफेस पॉलिशिंग रहता है, शाइनिंग रहता है, तो वो ज्यादा रिफ्लेक्ट लाइट करते. ओके, देन ऑब्जेक्ट हैविंग अनपॉलिश एंड डल सरफेस. और जो ऑब्जेक्ट का सरफेस डल रहता है या अनपॉलिश रहता है तो वो लाइट को लेस रिफ्लेक्ट करते. क्लियर दिस वन? सो here is the characteristic of best reflector. It should have shiny surface. आप यहाँ पे देख रहे हो, ओके, ये मिरर है तो इसमें शाइनी सरफेस है, तो लाइट यहाँ पे फॉल्स हुई, यहाँ से ये लाइट इज रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर, सो मिरर रिफ्लेक्ट द लाइट फॉलिंग ऑन इट. सेकेंड, इट शुड हैव पॉलिश सरफेस. मीन्स अगर सरफेस पे पॉलिश रहती है, जैसे आपने देखा होगा जो फ्लोर रहता है, स्टील के जो बर्तन रहते हैं जब वो नए आते तो किसी पॉलिशिंग रहता है, तो वो इट शुड हैव स्मूथ सरफेस. आपने देखा होगा जो फ्लोर रहता है, ओके, टाइल्स वगैरह रहती है, जब वो न्यू आती है तो वो शाइन भी करती है, पॉलिश भी रहती. ओके, मीन्स पॉलिश्ड और स्मूथ रहता है तो वो ज्यादा रिफ्लेक्ट लाइट करता है. क्लियर दिस वन? सिल्वर मेटल इज वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर्स ऑफ light. Now terminology involved in that reflection. Okay, first incident ray. Incident ray क्या होती है? It is the ray that strikes the surface. Look at this picture. This is a plane mirror. That incident ray, it is the ray that strike the surface. Means वो इस surface पे strike होती है. Okay. And second, points of incidence. और ये क्या है? Points of incident. It is the point at which incident ray strike the surface. Okay. Reflected ray. अब reflected ray क्या होती है? रिफ्लेक्टेड रे दैट बाउंस बैक ऑन द स्ट्राइकिंग सरफेस. और फिर जो स्ट्राइकिंग सरफेस है यहीं से जहां पे वो स्ट्राइक करती है तो वहीं से वो रिफ्लेक्ट होती है. ओके, बाउंस बैक ऑन द स्ट्राइकिंग द सरफेस. और एक जो नॉर्मल रे रहती है ये, ओके, आपको ये जो दिख रही है मिडल में, सो दैट इज द रे दैट विल ड्रॉन टू सरफेस, so that is normal ray. Clear this one? So the ray of light which falls on the mirror surface is called the incident ray. ओके, जो द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल. अब जो इंसिडेंट रे वो नॉर्मल के साथ में मीन्स एक एंगल फॉर्म कर रही है, सो दैट एंगल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस. सो द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे with the normal at the point of incidence. Angle of reflection is the angle made by the reflected ray with the normal. अभी जो reflected ray नॉर्मल रे के साथ में एंगल फॉर्म करती है, दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ओके, विद द नॉर्मल एट द पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंट. नाउ नेक्स्ट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ओके, द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम ए प्लेन सरफेस लाइक दैट ऑफ ए प्लेन मिरर और फ्रॉम ए स्फेरिकल सरफेस लाइक दैट ऑफ कॉन्केव मिरर और कन्वेक्स मिरर takes place according to two laws which are known as the law of reflection of light. So, first law of reflection, according to the first law of reflection of light, the incident ray, reflected ray and normal ray all lie on the same plane. Okay, so look here, this is the incident ray. Okay, this incident ray, this reflected ray and this normal. Okay, it all lie in the same plane. Second law of reflection, according to the second law of reflection of light, the angle of incidence is always equal to the angle of reflection. Means this incident ray normal ray के साथ में जो एंगल फॉर्म करती है, so that is always equal to the angle of reflection. Means reflected ray जो normal ray के साथ में जो एंगल फॉर्म करती है, that angle of reflection. Okay, so that both are always equal. The angle of incidence is I. If the angle of incidence is I and the angle of reflection is R,
Okay, then according to the second law of reflection, that is I is always equal to R. Clear this one? The second law of reflection of light means that if the angle of incidence is 35 degree, अगर ये 35 degree का है, okay, so then the angle of reflection will also be 35 degree. तो ये भी कितने का होगा, R जो है वो भी 35 degree का होगा. Okay, so and if the angle of incidence is changed to 45 degree, then the angle of reflection will also change and become 45 degree. So in every case, the angle of reflection remains equal to the angle of incidence. Clear this one? Thank you.